Sikkim, a land steeped in the spirituality of Buddhism, a country where beauty is at its element and set against the backdrop of the mighty Himalayas. It is in this autonomous Buddhist state in India that the monasteries never fail to capture the eyes of the wandering traveller. And it was during such a visit to the monastery that we discovered that the paper which the monks read off their prayer chants from had a unique origin, and we went to find out where exactly it came from. तो रालोंग कब से पीएमयू से कागज़ लेना शुरू किया? हम लोग 2000 से उधर से कागज़ लेने शुरू किया। उसके बाद में फर्स्ट में रुमतेक से मिलता था। रुमतेक में बहुत मोटा होता है, फिर अच्छे से नहीं निकलता था। फिर उधर से कंपनी, इस कागज़ का कंपनी आया, फिर वहाँ से अच्छा मिलता था क्वालिटी, और वहाँ से खरीद लेता था। तो आप साल भर में कितने बार पीएमयू से कागज़ लेते हैं? मालूम नहीं कितना लेता हूँ। हाँ, एक महीने में तो बहुत लेता हूँ हम लोग। तो रालोंग मॉनेस्ट्री अर्गाली पेपर के साथ क्या करते हैं? हम लोग पेचा छापते हैं। ये इसका नाम पेचा बोलता है। हम लोग इसे पेचा निकालते हैं, फिर मनी का सूंग बोलते हैं। फिर ये पेचा से इसे निकालता है, मनी में डालता है, फिर वो मनी बोलते हैं ना, इसे घुमाने वाला। I'm now at the Ralong Monastery, and these are the famous prayer wheels which you can often find in most Tibetan monasteries. Now it's very interesting to note that inside these prayer wheels are ancient scriptures written on the Argali paper, and the Ralong Monastery gets most of its supply of the Argali paper from the paper making unit in a nearby village called Borong-Polok. Borong-Polok is a sleepy village located up the hills in South Sikkim. It surprised us to find that a small factory exists in the heart of the mountains. The small building is the local handmade paper-making unit of Borong-Polok village. It's easy for anyone to discount it because of its size, but this powerful social enterprise that had great impact on various stakeholders in Borong-Polok is very important. Their paper is unique and popular among artists from parts of India and Australia, and has even won an award from the National Small Scale Industry Corporation. इसलिए उसको भी छोड़ के मैं अभी दिल्ली में भी दे रहा हूँ। दिल्ली में 3-4 लोग हैं, उसके अलावा और हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, ये सब मिला के हम इंडिया में 4 स्टेट में हम दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैं ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा दे रहा हूँ, और भूटान में भी दिया था, नेपाल में भी दिया था, अभी नहीं है। To learn more about the paper-making trade, we went to find out more about who in Borong-Polok supplies PMU with the Argali plant. We learned that Madan Tamang is one of the few farmers who gathers dried Argali plants and sells them to the PMU. When we spoke to Madan Tamang, he told us that it was very difficult to rely solely on farming cash crops, and that's why he had to turn to PMU to earn that extra income to support his family. यहाँ जो फैक्ट्री खुला है, यहाँ सबका लिए अच्छा है। कमाई कितने होते हैं? महीना में 1200 कमाई होता है, तो आपको 50 केजी का अर्गेली लेते हैं। 50 केजी का जो ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बाल बच्चा है उसका लिए। Besides the farmers, the PMU has also touched the lives of a group of women. These women work in the PMU and are involved in the making of the paper products. Ms. Geeta Rai is an employee in PMU and has been working for Mr. Jagan, the man who heads PMU, for the past 5 years. We were lucky enough to have received a house invite from her, and that's where we found out about her experiences at PMU. तपाईं किन PMU मा काम गरेको? किनकि मेरो घरबाट म मात्र एकजना पैसा कमाउने हो, र म पैसा कमाएर मैले मेरो छोरा प्रणयलाई र मेरो घर परिवारलाई हेरचाह गर्नको लागि काम गरेको। अनि मैले PMU मा काम गर्नको लागि कारण यो पनि
हो कि मेरो घरमा दाजुभाइ नभएको कारणले गर्दा घर परिवारलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ। घरको सबैभन्दा ठुलो भएको कारणले गर्दा मैले छोराको भार सम्हाल्नु पर्छ। तपाईलाई कसरी PMUले सहयोग गर्दछ? मेरो साथीहरूसँग बस्नु पाइरहेको छु। मेरो प्रणयलाई स्कुल पढाउनु पाइरहेको छु। स्कुल पढाउनको लागि सहयोग पाइरहेको छु। यदि म PMUमा काम नपाएको हो भनेदेखि सायद पढाउन सक्थिनँ पनि होला। Pranay Rai is 11 years old and is currently attending Sangam Academy, which is one of the 2 primary schools in Borong-Polok village. Even at such a young age though, Pranay is fully aware that his mom is working very hard to support his big family and particularly his dreams. My name is Pranay Rai. I live in Polok. My school name is Sangam Academy. I am 11 years old. I am studying class 4. I have 8 members of my family. भोलि पर्सि म डाक्टर हुने इच्छा छ। Geeta currently saves a quarter of her earnings in order to support Pranay's dreams in becoming a doctor. She hopes to one day send him to the capital city of Sikkim, Gangtok, to make his dreams come true. Like Geeta, it is the dream of all mothers at PMU for their sons and daughters to succeed in the future. PMU is to them the best way to build a bright future for their kids. The PMU has done a lot to touch the lives of the villagers. However, behind all the hope and dreams lie some problems. The man who runs the PMU, Mr. Jagan, was honest enough to share with us the problems which the PMU faces. एक्चुअली PMU में जितना भी हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं उसके लिए जो मार्केट कम होने की वजह से हम सैलरी टाइम में दे नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि सब लोग समझते हैं जैसा हम लोग 3 महीने तक सैलरी नहीं दिया, तो इसके लिए मैं बाद में मार्केट में जा कर के थोड़ा सेल करके वो लोग को सैलरी पेमेंट करते हैं। तो वो लोग समझते हैं, हमारा प्रॉब्लम समझते हैं, वो लोग हमसे भरोसा करके वो लोग आराम से काम करके हम लोग को हमारे ऑर्डर भी पूरा कर देते हैं। और दूसरा ये है, जैसे पहले हम लोग को रॉ मटेरियल का बहुत प्रॉब्लम था, जैसे ग्लू ले आना होता था और कलर ले आना होता था। उसके बारे में क्या हुआ कि पहले कालिम्पोंग से हम लोग को एक ग्लू का पर केजी 7,000 रुपया लेता था, और अभी वो ग्लू मैंने 270 रुपया केजी में ले आया दिल्ली से। तो इतना वो लोग हमसे लूटता था पैसा, और इसके वजह से हम लोग का बहुत सफ़र हुआ। और कलर की वजह से भी ऐसा ही हुआ, लेकिन कलर मैंने बहुत पहले ही ढूंढ चुका था, वो लोग से कलर नहीं ख़रीद रहा था, और दूसरा रॉ मटेरियल तो मैं ख़रीद रहा था। लेकिन ग्लू इसी साल अभी नवंबर महीना में मैंने इसको ढूंढ के आया दिल्ली से। और ये हम प्रॉब्लम अभी हम जितना भी प्रॉब्लम ये कर रहे हैं अभी सैलरी का भी हम जल्दी ये इसको भी संभाल लूँगा। मेरा ये है, माने कि मेरा ये पूरा भरोसा के साथ में मैं बता रहा हूँ कि मैं ये जल्दी करूँगा। Despite the problems which the PMU faces, Mr. Jagan does not give up easily because he's not alone in tackling these problems. Several NGOs have been lending support in many ways to the PMU. मैं हर साल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अटेंड करता हूँ दिल्ली में। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हम दिल्ली में हर साल करते हैं। तो हम नेटफी के सहारे और डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के सहारे और NSIC होता है नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके सहारे हम एग्जीबिशन जाया करता हूँ हर हमेशा। तो मैं एक्चुअली वहाँ में जा करके मैं अपना कार्ड दे करके पूरा आदमी के साथ में कांटेक्ट में रहता हूँ। तो कार्ड में मैं सिक्किम डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहारे हम बिज़नेस करता हूँ, क्योंकि सिक्किम डेवलपमेंट फाउंडेशन में एक्चुअली गैंगटॉक में उनका ऑफिस है। हमारा तो यहाँ बोरोंग में है, ना तो इंटरनेट है ना तो क्या है, इसलिए हम तो एक्चुअली गैंगटॉक में सिक्किम डेवलपमेंट के सारे वहाँ मैं बिज़नेस करता हूँ। और डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हमको बहुत सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ से चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये हर जगह जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड फेयर हर जगह होते रहता है, तो वहाँ हमको लेकर जाता है साथ में। और TADA का फैसिलिटी देता है, नेटफी भी हमको TADA की फैसिलिटी देता है, NSIC भी TADA की फैसिलिटी देता है, तो हमको उतना सफ़र नहीं होता है। Speaking to Mr. Jagan, we realized that he has big plans for the future of PMU and plans to expand it in the near future. The small factory has certainly made a huge imprint in the lives of so many people in Borong-Polok, from the monks in the monasteries to the farmers who supply the Argali plant, and to the little boy who has big dreams for the future. There is so much of potential for the PMU. In fact, before we left, we found out that the NGO is trying to replicate this model to other villages in Sikkim, like Yuksam. But perhaps what is more inspiring is Mr. Jagan's hope for the future of PMU. Actually, this factory is focus of our village. Yeah? That's why I cannot leave this factory. Then, because I spend so many time here, because 5 years long I spend my time. Yeah, and that's why also I cannot leave this factory, because that's why I used to every time work here. Coming from a city like Singapore with its modern facilities, the PMU factory seems to be considerably less developed. Yet, the PMU has proven what it is capable of doing despite its size. It was truly fascinating to discover how the PMU has transcended the lives of different people in Sikkim. This journey and discovery of the PMU has been nothing short of an inspiration. And it is no wonder that Borong-Polok is a unique Himalayan village. Truly, it is one of its kind.